वेलकम टू बायोमिक्स हब। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोटोग्राफी के बारे में। स्पेसिफिकली वी विल डिस्कस हियर द आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी, ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी जो प्रेजेंट है, ये एक सोल्यूशन में, हमारा एक सोल्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स प्रेजेंट रहता है। लाइक वी आर हैविंग cations as well anions, molecules which are present. So we need to separate. When we need to separate, during this time we have to perform the chromatography. So ion exchange chromatography, in ion exchange there are different type of ions like positive ion or negative ions. That means it is positively charged or negatively charged. So according to it, it is two types of chromatography is present. That is the cation exchange chromatography and anion exchange chromatography. Anion means it is negatively charged, cation means it is positively charged. So let us see how these things are taking place and what are the requirement for this. So for performing this, we need a burette like structure. So in this, what is present, there are different type of beads which are present, which are known as resins, okay, or we can tell it's beads. The beads are present, and these beads which are present, they are fully packed in the color. These beads can be agarose, it can be cellulose or citrus. Okay, so after that what happens, we need a buffer system, and this buffer system, it is a mobile element. This buffer system, mobile element is a buffer system. That means it will move, and this resins or the beads which we are using here, they are in the stationary phase. That means they are immobile in nature. In this buffer system, what we will use, the solutions which we want to separate, or the cations or the anions mixture which are present, we will mix this with this buffer system, and we will pour this inside this column. Okay, so here sample containing positive and negative molecules are poured in it. As it is having a mobile element, that is a buffer, it will help in transferring this or passing this phase, stationary phase. Okay, by this time what happens, if these beads which are present if the positive elements are present here, so in this case what will happen, positive and negative attracts always. So the molecules which were present in the sample or in the mobile buffer, they will attach in this case. Okay, so here let us see, this is the burette, and in this burette there are beads present. In this beads, what happens, there are charged molecules which are present. If this bead is containing the positive charge, suppose this bead which is present, there are attachment of some of the molecules through covalent bond. There are attachment of some of the molecules. Suppose in this bead there is attachment of positive ions. Okay, so from here we are transferring the mobile element or the buffer in which the cations and anions or the samples we need to separate, it is being added, and we will pour it in this. Okay, during this time what happens, here both positive as well as negative ions are present. If this bead is containing positive ions, that means this negative ions which are present in the sample, it will go and bind with this element. Okay, bind with these molecules, so easily the negative element cannot be transferred. So first what will be transferred, so here from this it will help in the passage of the positive ions. Okay, like you can see here in this beads, the positive molecules are present which are covalently attached with the beads, and from the sample the negative ions which were present, they are attracted. Okay, so as a mobile element will move, first of all it will help in the elimination of this positive ions. Okay, so this positive ions will be collected first. Okay, so here there is negative charge. So what we will do, we have to separate this negative charge. So in this we have to add more amount or the concentrated amount of negative charge, or we can add the salt.
Like for example, we will add the NaCl. So this NaCl which is present, it is negatively charged, it will compete with this negative molecules. Okay, so after this competition, what happens, it will, if this NaCl is more negative than the ions which were present here, this ions, negative ions was attached in this region, but this NaCl, when we pour this NaCl, they are more negatively charged as compared to the previous one. So here they will compete, the negative ions which were present earlier and the NaCl, they will compete. So now the NaCl will help in the dissociation of the negative ions which are present in the buffer system, and this NaCl will come and attach with this positive molecules. So after this, here the negative ions will be transferred. So which was less negative here in the solution which we were adding, which was present in the mobile phase, or we were adding in the buffer system, then what happens, that negative charge ions will be present. This negative charge again will be, some will be more negative charge, some will be less negative charge. So the less negative charge molecules which are present, they will be eluted first. Okay, then the more positive, more amount of negative charge molecules will be eluted. So this is known as anion exchange chromatography, because this NaCl which is present, it is a anion, it is negatively charged, so it is replacing a anion molecule. That is the reason it is negatively charged, or the negative ions are moving, and it is known as anion exchange chromatography. So in case of anion exchange chromatography, the negative ions which are present, they are being replaced by the NaCl. So that can be a question, that like in a anion exchange chromatography, what are the bits present? So it will be positive. The charge which are present in near the bits are the positive. Okay, so this is how the anion exchange chromatography works. The similar will be for the cation exchange chromatography. What will happen in case of the cation exchange chromatography? The bits which are present in this region, they will be negative. So if this is negative in the buffer system, which we the amount or the sample which will mix in the buffer system, they will also contain the negative as well as positive samples. So the positive samples which are present, they will be attracted towards the bits, and the negative elements will be passed faster in case of cation exchange chromatography. Then when we use some of the buffer systems, during this time, what happens for this exchange, the less positive ions will be eluted first as compared to the more positive. Okay, this is how the anion exchange as well as the cation exchange chromatography is working. Okay, so this anion exchange as well as cation exchange chromatography, they are also known by some other names. So let us see what are the other names which are being called to this ion exchange chromatography. So what we were discussing, there was cation exchange chromatography and anion exchange chromatography. This cation exchange chromatography, it is also known as acidic ion exchange chromatography, and anion exchange chromatography is known as basic ion exchange chromatography. So why it is? Because in this cation exchange chromatography, we were having a acidic molecule, that is COOH. When it gives out the proton, when it gives this H, it is being converted into COO minus. There is a donation of proton. That is the reason it becomes acidic. This cation which was present, it becomes acidic. That is the reason it is known as acidic ion exchange. But in case of anionic exchange, it is known as basic ion exchange, because here what happens, NH2 is present. This is a basic molecule. This main basic molecule, when the anion is exchanged, during this time there is gain of this H plus. So this H plus is taken by this NH2 and it gives NH3 plus. So here protonation is taking place. Here the protonation is taking place. That is the reason here it is known as basic ion exchange. Okay.
Next, if in the sample there are some of the protein molecules which are present, so how we will, what is the mechanism of this? So when we are having a protein, okay, so let us draw a protein molecule over here. If the protein molecule which is present, it will have no charge with it, or the net charge which is present, it is 0. Net charge which is present, it is 0. It is known as pi, which is known as isoelectric point. Okay, so if we, in this case, if we increase the pH, if the pH is increased, okay, if the pH is increased, during this time what happens, it is converted into a negative ion. This NH2 which was present, it will give one of the H plus. Okay, pH increase means it is having less H plus. During this time it will release one H, and it will make this a negative charge. Okay, it will make it negative. Okay, in the similar way, if the pH is less, that means H plus is high. So in this case what happens, this protein molecule which is present, it will take one proton molecule and it will be converted into COOH. So in this case there will be plus positive charge in it. Okay, so in case of low pH, what will happen? Here it is low pH. Low pH means it is having, sorry, this is less pH, this is high pH. If it is having low pH, then that means it is having positive charge in it. So in this case, the type of chromatography which will be taking place, that is the cation exchange. Okay, if it is having high pH, that means it is having negative charge. So here there will be anion exchange chromatography. Okay, so now we will see some of the conditions. So here it is depending upon the pi value and the pH value. If it is having low pH value, it is doing the cation exchange. If it is having high pH value, then it is doing the anion exchange. Now we will see some of the conditions for these things. Like the first condition is if the pH is greater than pi. Okay, if pH is more, during this time what happens, the ions, the molecules are positively charged. So here there will be cation exchange, here there will be cation exchange chromatography. Okay, if there will be pH equals to pi, the net charge will be 0. And if the pH is greater than pi, here it will give negative charge. The molecules will be negatively charged. So here what will happen? It will be anion exchange chromatography will take place. So how we will know that in what condition what chromatography we are going to use? So there will be a condition when the protein molecule which is present, it will be having the pi which is 4. During this time it is very low pi. So during this stage what we will do, we will take a little bit of high pH, that is 7, 8 or 9. Okay, during this time there will be anion exchange, because in this condition the pi is less as compared to pH. But when there is some other protein molecules in which the pi which is present, it is 11. Okay, so it is having high pi. So in this case we will take a little bit of low pH, that is 7, 8, 9. Okay, so in this condition what happens? The pH is less than pi. Okay, so here it will be positive. Here the positive ions will be present. So here cation exchange chromatography will take place. Okay, in this way it has been differentiated. So there are very much
questions which are being asked from this concept. So if you know the pH value, pi value, and what are the things, what are the type of exchange chromatography, what kind of exchange chromatography will take place if there is high pH, what will take place if there is low pH, you can able to solve the question. Okay, chromatography के बारे में. So chromatography, it is a technique in which we can differentiate the molecule. So ये जो पेपर chromatography जो present है, ये chromatography use करके हम differentiate कर सकते हैं polar as well as non-polar molecules को. So इस टेक्निक में एक चाहिए पेपर. So ये जो पेपर जो प्रेजेंट है, इसके 1 सेंटीमीटर ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड वी विल प्लेस अ solution or the solvents which needs to be separated. Okay, so और क्या चाहिए, और एक क्लोज कंटेनर, क्लोज जार चाहिए इसको परफॉर्म करने के लिए. So we can see here that paper chromatography is a type of planar chromatography whereby chromatography procedures are run on specialized paper. यहाँ पे कुछ specialized paper यूज होता है और इसका प्रिंसिपल क्या है. पेपर chromatography is popular for isolating, identifying and quantifying organic as well as inorganic compounds. इसको यूज करके हम organic as well as inorganic compounds को हम separate कर सकते हैं. It relies on partition rather than absorption or separation. Substances distribute between a stationary phase, moist cellulose layer which is polar. यहाँ पे दोनों चीज होगा, like a moist stationary phase होगा और एक polar molecule होगा. यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज जो प्रेजेंट है, इट इज ए मॉइस्ट सेल्यूलोज लेयर विच इज ए पोलर मॉलिक्यूल्स, और एक मोबाइल फेज होगा जो कि होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या बफर होगा जो कि नॉन पोलर नेचर का होगा. सो यहाँ पे नॉन पोलर क्या होगा, नॉन पोलर जो प्रेजेंट होगा इट विल बी द सॉल्वेंट और द बफर्स विच विल बी यूज्ड. और यहाँ पे पोलर कौन सा चीज होगा, पोलर जो होगा वो होगा पेपर जो कि लिक्विड से एब्जॉर्ब होगा. ओके, सो यहाँ पे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो यहाँ पे एक स्पेशलाइज पेपर यूज हो रहा है और ये स्पेशलाइज पेपर में 1 सेंटीमीटर नीचे से 1 सेंटीमीटर की दूरी में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और इस लाइन के पास वी विल प्लेस द सॉल्यूशंस व्हिच वी वांट टू सेपरेट, और इसको वो बफर में डीप करना है एंड वी हैव टू प्लेस इट इन सच ए वे दैट इस सॉल्वेंट के ऊपर वो टच नहीं होगा. ओके, देन ये जो पेपर जो है उसको ये जो पोलर मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो प्रेजेंट था विच वाज द मोबाइल फेज ये जो है वो कैपिलरी एक्शन में ऊपर ट्रांसफर होगा. ओके, ड्यू टू विच यहाँ पे जो पोलर एज वेल एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो भी उसके कैपिलरी एक्शन के वजह से वो भी ट्रांसफर होंगे. सो हाउ वी विल डिफरेंशिएट दैट विच इज अ पोलर थिंग्स एंड विच इज अ नॉन पोलर थिंग्स. ओके, यहाँ पे और एक डायग्राम से भी हम जान सकते हैं. लाइक यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन क्या होगा, सपोज ये जो है ए इधर आके रुक जाएगा और वो ऊपर नहीं जा सकता है. इन अ सिमिलर वे बी जो है कुछ यहाँ पे आकर रुक जाएगा, सी जो है वो कुछ यहाँ आकर रुकेगा एंड डी विच इज प्रेजेंट इट विल कम हियर. सो हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट विच इज पोलर एंड विच इज नॉन पोलर. सो यहाँ पे हम क्या देखे थे, जो एक्वस सोल्यूशन और द बफर जो प्रेजेंट था, और वी कैन टेल द मोबाइल एलिमेंट जो प्रेजेंट था वो क्या था, वो पोलर नेचर का था. ठीक है, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्रेजेंट है दे वर द नॉन पोलर. ठीक है, ये जो है वो नॉन पोलर है. सो यहाँ पे ए का देखिए, ये जो प्रेजेंट है वो बफर के पास प्रेजेंट है, इट इज नॉट गोइंग अपवर्ड, दैट मीन्स ये पोलर नेचर का है क्योंकि हमेशा पोलर के साथ अटैच होगा और पोलर विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पोलर. और नॉन पोलर जो प्रेजेंट है वो नॉन पोलर के साथ वो अटैच रहेगा और अट्रैक्ट रहेगा. सो यहाँ पे ए जो प्रेजेंट होगा इट विल बी ऑफ पोलर नेचर. ये जो प्रेजेंट है ये सोल्यूशन के पास प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के पास प्रेजेंट है, सो इट विल बी ऑफ पोलर नेचर. और ये जो डी जो प्रेजेंट है इसका नेचर क्या होगा, इट विल बी
नॉन पोलर। ओके, सो ये जो प्रेजेंट है ये ए से ज़्यादा पोलर होगा, नेक्स्ट बी से ज़्यादा पोलर होगा सी, और सबसे नॉन पोलर होगा हमारा टी। सो इन दिस वे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डिफ्रेंशिएट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए जो प्रेजेंट है, सपोज पोलैरिटी के वजह से ये है ए एंड दिस इज द टी। इसमें से हम आर एफ वैल्यू भी निकाल सकते हैं विच इज द फर्स्ट ए बाई डी। ओके, सो इसका क्या है, डिस्टेंस ए इज डिस्टेंस molecule is traveling by distance of solvent traveled। ओके, ये जो D जो प्रेजेंट है, इट इज द टोटल डिस्टेंस बाई विच द सॉल्वेंट हैज ट्रेवल्ड एंड A is the distance the molecule has traversed. So in this way you can identify the RF value. Okay, like we can see here. So what is the RF value? In paper chromatography, compounds in a mixture travel different distance relative to the solvent. Solvent के हिसाब से वो different distance में जा सकते हैं। The distance travel relative to the solvent. The distance travel relative to the solvent is called the RF value. RF value is calculated for each separate compound in the developed chromatograph. It represents the distance traveled by the component from the application point. So ये जो present होता है, it is the distance traveled by the component. Okay, so what is the application of this paper chromatography? It is used for checking the purity of pharmaceuticals, detecting adolescents, detecting contaminants in food as well as string. It is also used for studying the ripening and fermentation process and as well as in the drug industry. Okay, this is what about the paper chromatography. Okay, thank you everyone for watching this video till the end, and if you like this video please do not forget to subscribe. Thank you. Exclusion chromatography के बारे में। So ये जो टेक्निक जो प्रेजेंट होता है, it is a chromatography in which the molecules are separated according to the size. So जब कभी भी हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो वो डिफरेंट साइज का प्रेजेंट रहेगा। लाइक कुछ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो लार्ज साइज के रहेंगे, कुछ मीडियम साइज के रहेंगे और कुछ छोटे साइज के रहेंगे। सो इन लोगों को हम कैसे एक सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं विच इज नोन एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। और ये जो प्रेजेंट है इसको परफॉर्म करने के लिए हमें एक कैपिलरी चाहिए जिसमें कि बीड्स प्रेजेंट होगा, एंड दिस बीड्स जो प्रेजेंट है इट कैन बी मेड अप ऑफ एगेरोस। ओके, सो ये जो प्रेजेंट है इसमें हम क्या डालेंगे, एक सोल्यूशन होगा, या ये जो प्रेजेंट है इट इज वर्किंग, ये जो बीड्स जो प्रेजेंट होता है इट इज वर्किंग एज ए स्टेशनरी फेज। ये जो बीड्स इनके बीड्स प्रेजेंट होता है इट इज वर्किंग एज ए स्टेशनरी फेज। ओके, इसको मोबाइल फेज भी चाहिए। दिस मोबाइल फेज में क्या होता है, मोबाइल फेज में होता है बफर होता है, और इस बफर में ही हम अपना सॉल्यूशन जिसमें से कि हम दोनों मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाहते हैं उस सॉल्यूशन को डालते हैं, एंड वी आर पोरिंग दिस इन द कैपिलरी ट्यूब। ओके, सो जो यहाँ पे इस सोल्यूशन में क्या है, इस सोल्यूशन में बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है एज वेल एज लार्ज मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। यू कैन सी हियर ये जो ग्रीन कलर का जो प्रेजेंट होता है इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें से पहले कौन सा मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बिट्स जो प्रेजेंट होता है इट इज लाइक ए नेट लाइक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन इट, जिसमें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये बिट्स में वो एम्बेडेड हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ स्पेस है, लाइक यू कैन सी हियर द स्पेस बिटवीन द बिट्स। इस स्पेस में पास करके ये जो बड़े बिट्स जो प्रेजेंट होते हैं इट विल पास थ्रू दिस बिट्स एंड इट विल बी इल्यूटेड। ओके, ये जो पहले इल्यूट हो जाएगा।
ओके। उसके बाद क्या होगा, जो छोटे छोटे जो बिट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इस बिट्स के अंदर वो फंस जाएंगे। ओके, सो व्हेन देयर विल बी कंटिन्यूअस यूज ऑफ दिस बफर, जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आएंगे, देन द टर्न ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल बी दैट। ओके, सो यहाँ पे आप ये ग्राफ भी देख सकते हैं, लाइक कैसे यहाँ पे बहुत टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, छोटे बड़े मिक्स सब प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये स्पेस को यूज करके ये बड़े मॉलिक्यूल्स पहले निकल आए। ओके, सो यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले आ गए हमारा बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स। ओके, आफ्टर दैट कम्स द मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स, सबसे लास्ट में आ जाएंगे हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि फंस गए थे ये बिट्स के अंदर। ओके, सो ये जो क्रोमेटोग्राफी जो प्रेजेंट है विच इज नोन एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ये इससे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स, डिपेंडिंग अपन साइज एज वेल एज शेप। ओके, यहाँ पे दोनों टाइप का शेप का भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक एक हो सकता है फाइब्रियस और एक हो सकता है ग्लोबुलर। ओके, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबुलर सोल्यूशन में जो ग्लोबुलर सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है वो फास्ट बाहर आते हैं एज कंपेयर टू द फाइब्रियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो यहाँ पे एक कैलकुलेशन है, लाइक यहाँ पे जो बिट्स जो प्रेजेंट होते हैं इसे बोलते हैं Vx। Vx मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ बिट्स। नेक्स्ट होता है V0। V0 जो प्रेजेंट है इट इज द वॉल्यूम ऑफ voids। voids का मतलब क्या है, इट इज द स्पेस विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द बिट्स। ओके, सो इस टोटल को बोलते हैं Vt विच इज Vx प्लस V0, दिस इज द टोटल स्पेस। सो यहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को बाहर आने के लिए जो टाइम चाहिए होता है इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपन द कैपिलरी, लाइक वो कैपिलरी अगर मोटा है, अगर बहुत ज़्यादा लंबा है, देन इट विल टेक ए मोर टाइम। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फिक्स्ड कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है विच इज नोन एज VE। ओके, ये एक स्टैंडर्ड है। सो ये जो VE जो प्रेजेंट है व्हाट इट इज द अमाउंट, इट इज द amount of solvent, it is the amount of solvent required to elute solute। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम एक बफर सिस्टम यूज करेंगे, व्हाट इज द मेन पर्पस, हमारा मेन पर्पस है कि जो हमारा कंपाउंड जो प्रेजेंट है, जो सल्यूट प्रेजेंट है, उस सल्यूट में से कौन सा बड़ा मॉलिक्यूल है, कौन सा छोटा मॉलिक्यूल है, उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो फॉर द मोबाइल फेज वी आर ऑल्सो यूजिंग द बफर। सो VE जो प्रेजेंट है ये इसका कैलकुलेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज वर्किंग एज ए मोबाइल फेज रिक्वायर्ड टू इल्यूट द सल्यूट। सल्यूट को इल्यूट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, इट इज द VE। ओके, सो इसको जो चाहिए, इस पूरा फेज को जितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ एज वेल एज द थिकनेस, दैट इज ए फॉर्मूला विच इज नोन एज VE by V0। सो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव इल्यूशन वॉल्यूम। ठीक है, सो लेट अस रिवाइज अनदर टाइम। सो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो प्रेजेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज एज वेल एज द शेप। साइज में डिफरेंट साइज होते हैं मॉलिक्यूल्स का, लाइक बड़ा साइज हो सकता है, मीडियम साइज हो सकता है, स्मॉल साइज होता है, सो हो सकता है। यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज जो प्रेजेंट है इट इज द बिट्स, और ये बिट्स जो प्रेजेंट होता है इट कैन बी मेड अप ऑफ सिफाडेक्स, बायोजेल और सेफेरोज। ओके, सो ये जो हमारा सोल्यूशन जो प्रेजेंट होता है उसको एक बफर सिस्टम चाहिए ये वर्क करने के लिए। सो यहाँ पे एक बफर सिस्टम में क्या करेंगे, हम जो सोल्यूशन से हमें सेपरेट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको भी डालकर वी विल
we will place it in the column. सो ये जो प्रेजेंट होता है इट इज़ अ मोबाइल फेज. सो ये जो सोल्यूशन जो प्रेजेंट होता है ये एक मोबाइल फेज है. सो पहले कौन सा मॉलिक्यूल्स निकलेगा बाहर? पहले निकलेगा हमारा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो इस बिट्स के अंदर अटक जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज प्रेजेंट होते हैं लाइक Vx. Vx का मतलब क्या है? इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ द बिट्स जो प्रेजेंट होता है हमारे कैपिलरी में, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ द बिट्स. V0 होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. वॉइड्स का मतलब होता है जो एम्प्टी स्पेस बिटवीन द बिट्स जो प्रेजेंट होता है, इट इज द वॉइड्स. Vt इज द टोटल वॉल्यूम, मतलब Vx प्लस V0 इक्वल्स टू Vt. उसके बाद Ve क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू इल्यूट सल्यूट. जो छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट थे हमारा बफर सिस्टम में, इस मॉलिक्यूल्स को बाहर लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट चाहिए, दैट इज द Ve. उसके बाद है रिलेटिव एक्सक्लूजन वॉल्यूम. उसका मतलब क्या है? हमारा अगर छोटे साइज का रहेगा हमारा कैपिलरी तो मॉलिक्यूल्स जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर उस कैपिलरी का लेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगा ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपेंस, द सेम वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स will be eluted but it will take long time. So for maintaining this, उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला है that is known as the relative exclusion volume. Okay, it is the standard. तो इसको अगर हम डालेंगे तो it will not differ, the graph will not differ whether the size is small, size is long, it is thick or thin. So ये जो फॉर्मूला जो है it is a Ve by V0. This is how the size exclusion chromatography is working. Chromatography के बारे में. So what do you mean by Hello everyone, welcome to Biomix Sub. Hope you're doing well. So इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे about the column chromatography. Chromatography का मतलब क्या होता है? For differentiating some of the molecules. So ये जो column chromatography जो present है ये हमें यूज़ करना है जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक सोल्यूशन से डिपेंडिंग अपॉन द polarity, whether it is polar or non-polar. When we are differentiating from the polar as well as the non-polar, we can use this technique. So इसके लिए क्या चाहिए? ये जो कैपिलरी जो प्रेजेंट होता है इसके पास एक कॉटन प्लग होता है, इसके नीचे होता है कॉटन प्लग. ओके, उसके ऊपर हमें कुछ सैंड से इंसर्ट करना है फॉर 1 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे होगा स्टेशनरी फेज. ये जो स्टेशनरी फेज जो प्रेजेंट होता है इट इज द सिलिका पाउडर. ये जो सिलिका पाउडर जो प्रेजेंट है इट इज ए पाउडरी लाइक नेचर. सो उसको स्टेबल करने के लिए हमें एक सॉल्वेंट भी चाहिए ताकि वो थोड़ा वेट हो सके. ओके, आफ्टर दैट हमें सैंपल लोड करना है. ये जो सैंपल जो प्रेजेंट है यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो प्रेजेंट है ये कुछ मिक्सचर से होगा ग्रीन. So the green color will be from this yellow, will be by the interaction of some pink as well as yellow. Okay, so it is not from pink and yellow, it is from yellow and blue. Yellow and blue से हो जाएगा हमारा green color. Okay, so उसके बाद हम क्या करेंगे? एक सॉल्वेंट को उसके अंदर भेजेंगे. Okay, this is the mobile phase. This solvent which is present, it is working as a mobile phase. जैसे कि हम एक मोबाइल फेज को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, so it will interact with the sample. Okay, this mobile phase which is present, it will interact with the sample and it will also pass through this silica. So इसी interaction के टाइम क्या होगा? जो strong interaction दिखाएगा हमारा सिलिका के साथ वो ऊपर रह जाएगा and which will be showing the interaction more with the solution. वो क्या होगा? वो धीरे धीरे नीचे आएगा और it will be collected in a tube. Okay, ये जो molecules जो मोबाइल फेज के साथ जल्दी आ रहा है like this green color one which is present, it is coming faster. So ये क्या हुआ? ये जो है वो नॉन पोलर नेचर का होगा. It is of non polar nature क्योंकि it is coming with this मोबाइल एलिमेंट. ओके, ड्यू टू विच इट इज नॉन पोलर इन नेचर क्योंकि वो एक्वस सोल्यूशन के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज द रीजन इट इज नॉन पोलर. उसी तरह यहाँ पे प्रेजेंट होगा
प्रेजेंट होगा उसका दूसरा मॉलिक्यूल्स जो कि होगा थोड़ा पोलर नेचर का। जब हम और फिर से डालेंगे हमारा इल्यूशन बफर, ड्यूरिंग दिस टाइम साइमल्टेनियसली इट विल क्रॉस दिस लेयर एंड इट विल बी इल्यूटेड आउट। सो इस मॉलिक्यूल को जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट था वो बहुत ही जल्दी मोबाइल एलिमेंट के साथ मिलकर वो फास्टली बाहर आ गया, बिकॉज इट इज हैविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर दोनों मिल इट विल बी अट्रैक्टेड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज द रीजन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल विच वॉज प्रेजेंट इन द सैंपल इट इज इंटरैक्टिंग विद द मोबाइल एलिमेंट फर्स्ट एंड इट इज बीइंग इल्यूटेड आउट। ओके, और जो पोलर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट था वो ऊपर रह गया। जब हम बहुत ज़्यादा फिर से मोबाइल फेज को और वी कैन टेल एज अ सॉल्वेंट को हम डाले वो कैपिलरी में, ड्यूरिंग दिस टाइम द पोलर मॉलिक्यूल अगेन इट इज मिक्सिंग एंड इट इज रिमूव। सो इसका जो प्रोसेस जो है इस पोलर मॉलिक्यूल का बाहर निकलने का, इट विल टेक ए लिटिल बिट more time as compared to the non-polar molecule. This is how we can differentiate between, we can extract the non-polar molecule as well as the polar molecules.